Hello everyone, good afternoon students. I hope you are fine. Now today we are starting with our next class of the gravitation potential energy. In last class we were discussed already with a gravitational, their different acceleration due to gravity in during the variation. कि acceleration of the gravity आपकी कैसे vary करती है if we are going on the surface, then at some height, then as we are going inside the earth, then at the d depth how much change in the acceleration due to gravity कि आपकी small g की value में कैसे variation आता है, where it will be maximum and minimum. So I told beta this one where it will be maximum and minimum. Maximum will be on the pole and your minimum will be at equator. After that beta we discuss today we will discuss about the gravitation potential energy and their field. Yesterday some about the field I told you beta. Gravitational field, that is a space around a material body, any body we are taking around that body, space in which its gravitation pull can be experienced by the another body, then we will call it by the gravitational field. कि for example ये आपका पिक्चर्स में क्या गिवन है, अर्थ गिवन है बेटा, ये आपका मून गिवन है, तो अर्थ के चारों तरफ क्या है, अपना खुद का ग्रेविटेशन फील्ड है. जैसे इस फील्ड के अंदर क्या आएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एंटर करेगा, देन some attractive nature will be feel by that object. इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कुछ अट्रैक्टिव पावर फील की जाएगी, एक्सपीरियंस की जाएगा, और इस अट्रैक्टिव नेचर को क्या कहते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. कि जैसे ही अर्थ के इस फील्ड के अंदर एंटर करेगा, देन देयर विल बी एक्सपीरियंस सम अट्रैक्टिव फोर्स एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फील्ड. Okay, so this one your space around this one earth is known as the gravitational field of the earth, and front of this one here beta moon is there. तो यहाँ चारों तरफ मून का क्या रहेगा, मून का फील्ड रहेगा कि अदर इसके एरिया में कोई भी एंटर करेगा, इसके चारों तरफ का वो स्पेस जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एंटर कर रहा है, देन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मून. ओके, सो सराउंडिंग दिस वन मून, दैट स्पेस इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, दैट इज एक्सपीरियंस सम अट्रैक्टिव फोर्स, वी विल कॉल इट but gravitational field. Okay, so this is a representation of the gravitation field beta of the earth and moon. This one is a field surrounding this one, your earth is known as a gravitation field of the earth, and this one surrounding this one, that is a gravitational field of the moon. Okay, vector field and its associated scalar, this one gravitation field जो आपका gravitation potential field है बेटा, that is space only. अंडरस्टूड ना, वो स्पेस होता है जिसके अंदर क्या कोई भी मटेरियल अगर एंटर करता है, देन इट विल एक्सपीरियंस सम द ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव फोर्स ओनली. नेक्स्ट बेटा इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड. इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड वी विल कॉल इट देयर फोर्स पर यूनिट मास, यू कैन से दैट इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशन. वी कैन से फोर्स per unit mass, that we will call it intensity of the gravitational field. Okay, force we discussed already, that force will be which one force, gravitation force, g m1 m2 by our r square, by using the universal law of the gravitation. That force we will call it gravitation force, and gravitation force we can write there g m1 m2 by r square. Okay, so this one force per unit mass we will call it intensity of the gravitation field, that is measure of the gravitation field strength. Okay, physical meaning you can say it is a measure the field strength. कि हमारे जो किसी भी बॉडी के चारों तरफ की, अर्थ ये है, अर्थ के चारों तरफ का ये स्पेस जिसके अंदर कोई बॉडी एंटर कर रही है, देन इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ सरफेस. तो अर्थ क्या कर रही है, उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, इट विल बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड और इट विल बी वीक अट्रैक्टेड. दैट मींस स्ट्रेंथ ऑफ दिस फील्ड by which body is attracted by this one, that strength we will call it intensity of the gravitational field. Okay, so we can write there strength of the gravitational field is known as intensity. It is the gravitational force exerted on a test mass of a unit, 1 unit. कि this one intensity is a force per unit mass is known as the, mathematically we can say this one, mathematically we can say like this one beta. Mathematically we can say intensity equal to force per unit mass is known as the intensity of the gravitation field, and this one your Newton per kg, and it is your vector quantity beta, it is vector quantity.
vector quantity. Because your force is vector quantity, clear? Per unit mass is our which quantity? Scalar quantity. अगर वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं देन वी विल गेट ऑलवेज दी वेक्टर क्वांटिटी. तो ये क्या होती है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो किसके लिए यूज होती है? स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड. ग्रेविटेशन फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कि कैसा आपका अट्रैक्टिव जो नेचर है फील्ड फोर्स का, अट्रैक्टिव नेचर हमने बताया ना कि दैट ऑलवेज विल बी अट्रैक्टिव नॉट रिपल्सिव. तो हमेशा इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है या वीकली अट्रैक्ट कर रहा है या मीडियम में लाई कर रहा है, दैट इज अ योर intensity of the gravitation field only. Now next your topic beta, that is a gravitational potential energy. Okay, energy always will be stored in form of the work done. That any body is coming from the infinite to the any given reference point, then how much work is done by that mass is known as the gravitational potential energy. Okay, so here we can read it. When a body of mass m is moving from infinite to the inside the gravitational influence of the source m, let here we are taking their earth. यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं दैट अर्थ इट्स मास इज m we are taking and here r is radius of this one. Clear? Any object we are taking here, then it is coming toward this one and it is coming from the infinite. कहाँ से आ रहा है? ये infinite से आ रहा है बेटा. And here we are taking q point and here we are assuming their p point. This one here, this distance we are taking their x and this one small distance let we are taking dx. क्लियर? सो ये कह रहा है कि जब कोई भी बॉडी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? दैट एनर्जी हमेशा किस फॉर्म में स्टोर होती है? आई टोल्ड ना ऑलरेडी दैट ऑलवेज स्टोर इन फॉर्म ऑफ द वर्क डन. जब कोई भी बॉडी कितना वर्क करती है, जितना भी वर्क करेगी बेटा, वो क्या होती है? उसकी एनर्जी होती है. तो जब ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होगी? जब कोई भी अगर पार्टिकल है जिसका मास m है कमिंग टुवर्ड द अर्थ सरफेस, अर्थ की तरफ आ रही किसी इनफाइनाइट पॉइंट से लेकर, मींस गिवन पॉइंट भी हो सकता है बट एट द इनफाइनाइट कैन बी एनी पॉइंट. ओके, इनफाइनाइट तक कोई भी पोजीशन हो सकती है जहां से वो क्या है? अर्थ की तरफ आ रहा है. सो कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू दी एनी रेफरेंस पॉइंट, एनी गिवन पॉइंट, then here total work done coming from here to there under the effect of the gravitation force, that work done is known as the gravitation potential energy. So now read this one. When a body of mass m moving infinite to the point, reference point, you can say given point, inside the gravitational influence of the source m without accelerating it. ये accelerate नहीं कर रहा बेटा, ये इसकी तरफ आ रही है. That is not accelerating, rest only that this one body is accelerating toward this one. Okay, so amount of work done in displacing it into the source field. ये आपका सोर्स है, तो जितना वर्क होगा बाय दिस वन बॉडी कमिंग फ्रॉम हियर टू दिस साइड स्टोर इन फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. किस फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है. एंड दिस वन इज नोन एज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन सिंबल. ओके, एंड एनर्जी इट इज आवर स्केलर क्वांटिटी. व्हाट इट इज? स्केलर क्वांटिटी. It is scalar quantity only, and its SI unit we can write there. Its SI unit here joule only, because this one is your energy only. So this one is a form of the work done only. Unit will be remain joule only. So here this one energy will be equal to beta minus gmm by your r. If we are taking x distance, then it will be your x only. So here this one gmm by r, this one energy. How we can derive this one? We will see this one. Okay, I hope you understood बेटा. एनर्जी चाहे कहीं भी फाइंड करनी हो, वहां पे हम क्या फाइंड करते हैं? उसका वर्क डन फाइंड करते हैं. अगर आपकी इसकी जगह ग्रेविटेशन की जगह इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होती, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो भी हम ऐसे ही फाइंड करते हैं, बट उसके अंदर मास की जगह क्या आ जाता है? चार्ज पार्टिकल आ जाता है. क्लियर? एनी चार्ज इज कमिंग फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट, देन टोटल वर्क डन बाय दैट चार्ज. Okay, by that charge coming from infinite to that given point, then is known as the electric potential energy. उसी तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हो इलेक्ट्रिक के साथ, उसी तरीके से ग्रेविटेशन में. अब चार्ज को अगर हम मास के साथ रिप्लेस कर दे कि ऐसी कोई बॉडी जिसका क्या होता है? मास होता है, तो क्या है? वो यहाँ से यहाँ तक चल के आएगी.
For example, this one, your body whose mass is capital M, another particle test mass we are taking here coming toward this one. Okay, and let its position is from the coming from the infinite. कहाँ से आ रहा है? Infinite से आ रहा है. तो यहाँ से यहाँ तक किसी गिवन पॉइंट तक आने के लिए इसको जितना भी वर्क करना पड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. ओके, मास की जगह चार्ज होगा तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इफ मैग्नेट इज देयर देन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. Understood na? Okay, so here we will find this one. Let here this one, let a body of mass small m is coming from infinite to reference point. Reference या given point. Reference point, given point P we can write it. Okay, so P to Q. Here we are writing beta Q. There's small change in this one. Here we are making again this one. Here that is P point. Here we are taking their Q point. Here change is this one, we are taking beta dr, and from here to there we are taking r distance. Clear? And this one body is coming toward this one. Infinite से कहाँ आ रही है? इसकी तरफ आ रही है. तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क करेगा? That we will find there. Okay, coming toward this one, and let a body of mass is coming from infinite to the reference point, and here source point, and here source mass is capital M. Okay, capital M. Now consider body mass M reach at Q to P for small displacement. Small displacement dr. हम क्या लेके चल रहे हैं? dr is small displacement, so small amount of work is done. Work is done by massless body. So here we can write beta dw, small amount of the work done dw for the small displacement here to there. कहाँ से कहाँ आ रही? Infinite से P point पे आई. So small amount of the work done, then small displacement will be there. Then here we can write there F dot dr. Know na about this one relation because already discussed na beta this one in previous unit. Your work done we can write there F dot dr. Okay, your force is attraction here this one. Now here we can write there F dr we can write there, and here will be right there. Remove this one dot, then here we can write cos theta. Clear? Then after this one, here body is going from here to there, then coming toward this one, then here we can write there dr only, F dr. Clear? After this one, your small work done is there. Then for find out the total work done, then for gravitation फोर्स, कैसा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है. दैट्स व्हाई यूजिंग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन constant. Clear? Then we know about this one, F equal to G m by r square. Clear? G m by
r square. This one mass is capital M and this one here small m, and r is the distance between these masses. So here, so dw equal to your gmm by your r square. Here we are using dr only. After this one, here we can write there minus your, for total work done, then we can write beta, for total work done, for total work done, take integration on both side. Integration on both sides. क्या यूज करेंगे हम? इंटीग्रेशन यूज करेंगे दोनों साइड कि इधर क्या स्मॉल वर्क डन है, फॉर फाइंड आउट टोटल वर्क डन देन वी विल टेक इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेशन एक साइड तो कर नहीं सकते, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक बोथ साइड. सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, देन dw इक्वल टू gmm by your r square. Okay, then here will be your dr. So here beta negative will be there, here direction will be your opposite, that's why here we will take their negative sign. Theta will be equal to your 180. Okay, so after this one here, this one here will be your negative only. Now for total work done we will take integration. Integration कहाँ से कहाँ तक लेंगे? Initially work will be zero, then body is coming from infinite to our r distance. Okay, body is coming from final velocity, finally initially at the position this one here coming, initial position this one, final is infinite, then your work done is w as it will reach your r distance. Understood? I hope this one. So here we can write there w is of total work done beta, then here we can write there gmm, this one our your constant gmm small r, then here left here 1 by r your dr. कहाँ से कहाँ तक? Infinite to r. Clear? Any given point से कहाँ आ रही है वो? Infinite पे आ रही है. So here this one left. Now take this one here dw. इसका integration understood ना? From here to there integration करेंगे, w आएगा, then we will put the limit final minus initial, then here we left there w only. Okay, so here we can write after this one w equal to gmm, then here will be your 1 by r beta square dr infinite to your r. Here we will write initial limit and here we will write final limit. After that here we can write there gmm. Clear? Constant only. Take integration of this one. Integration how told I? Then power will be n of dx, then we will add 1 in this power 1. After adding 1 then we will write there same this side and here any constant will be there. Clear? So same formula we will use. इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर ले जाने के बाद क्या आएगा बेटा? 1 by r square dr we can write there r minus 2 dr. Like this one we can write there. Clear? Then here integration of r minus 1 we can write there power प्लस, पावर क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे इसके अंदर, -1 + 1 -2 + 1. So here r will be -1, then here left this one and minus वापस -1 पावर इसको वापस से नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 by r. Clear? So here left after the integration this one left beta 1 by r. This one here infinite to r. Clear? So here we can write there gmm by this one here r only, then here limit we are keeping here. How you can write limit? 1 by r minus here 1 by infinite, and this one term here 0 only left, so here minus beta gmm by here r. Then this is the work done when any body is coming from infinite to any reference point. कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी हमारी अर्थ है, दूसरा पार्टिकल इधर से आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या है, कोई भी अगर जितना वर्क करेगा that work will be stored in form of the gravitation potential energy, and that is equal to your minus gmm by r. So this one work is stored in form of the gravitation potential energy beta. That's why we
can write this one, u equal to minus g mm by your r only. Clear? This negative sign is indicating that force is acting on this one, that is your attractive nature. Okay, ये क्या show कर रहा है? Attractive nature show कर रहा है. Attractive nature. That part is attracting toward the masses. That's why this one here, gravitational potential energy. I thought you understood beta how you can solve this one, gravitational potential energy. Now next one beta, our escape velocity. Clear? There is a two type of the velocity will be there. Escape velocity क्या होता है? That is a minimum velocity which is required to escape the body, come out of the earth gravitational field. That is known as the escape velocity. Okay, that is escape velocity. The minimum velocity required to eject any body from earth atmosphere, earth gravitational atmosphere, earth gravitational field. That is, we can write with that is body never come back on earth surface. That is known as the escape velocity. ओके, कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी, कम से कम वेलोसिटी की इफ वी आर इजेक्टिंग एनी ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल, इस ऑब्जेक्ट को कहा है मैं ऊपर की तरफ थ्रो कर रही हूँ, तो इसको कम से कम ऐसी वेलोसिटी के साथ डालूं दैट इट नेवर बी कम बैक. ओके, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसी वेलोसिटी के साथ इजेक्ट करना कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाए, ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाए, तो क्या होगा? अर्थ कांट बी अट्रैक्ट टुवर्ड इटसेल्फ, अर्थ उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगी. तो दैट वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एनी ऑब्जेक्ट दैट विल बी कम आउट फ्रॉम दी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, दैट नेवर बी कम बैक ऑन दी अर्थ सरफेस, वापस अर्थ के ऊपर ना आए. तो इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी. एस्केप का मीनिंग ही क्या होता है बेटा? बच के निकलना. ओके, एस्केप आउट, टू कम आउट फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर. कि अगर हम क्या लेके चल रहे, दिस वन इज आवर अर्थ, देन फ्रॉम द अर्थ देन वी आर इजेक्टिंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर टू अपवर्ड डायरेक्शन. यहाँ से हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो वो वेलोसिटी, कम से कम वेलोसिटी, दैट बॉडी विल बी नेवर कम बैक ऑन द अर्थ सरफेस, इट विल बी रिमेन इन द स्पेस. वो क्या है? वापस स्पेस के अंदर ही रह जाए. तो इस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी. ओके, it is denoted by VE, and it is vector quantity beta, vector quantity and its value is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, नॉट हावर, 11.2 सेकेंड पर सेकेंड. इतनी स्पीड के साथ अगर इसको डाला जाए किसी ऑब्जेक्ट को, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है, वापस कभी नहीं आएगा. इट विल नेवर कम बैक ऑन दी अर्थ सरफेस, इट विल बी रिमेन हियर ओनली. क्लियर? तो इसके बाद इस वेलोसिटी को सेट किया जाता है ऐसी वेलोसिटी के साथ कि इट विल बी रिमेन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. वो अर्थ के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर दे. जैसे ही घूमना स्टार्ट करेगी बेटा, जिस वेलोसिटी के साथ वो रिवॉल्व करेगी, उस वेलोसिटी की हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी. क्लियर? दो वेलोसिटी वी विल डिस्कस हियर. वन इज एस्केप वेलोसिटी, सेकंड वी विल डू ऑर्बिटल वेलोसिटी. ओके, एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? दैट बॉडी विल बी हियर. आई एम टेलिंग यू बोथ टाइप ऑफ द वेलोसिटी. फर्स्ट वन हियर, एस्केप वेलोसिटी हियर. First one here, escape velocity.
Second one we will discuss orbital velocity. Orbital velocity. क्लियर, दो टाइप की वेलोसिटी होगी. अगर फॉर एग्जांपल हम किसी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, बेटा सैटेलाइट की बात, तो सैटेलाइट के अंदर क्या होता है कि हमें क्या भेजना होता है, अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर डालना होता है. क्लियर, तो सैटेलाइट्स को हमें अर्थ की सरफेस से हमें क्या बाहर निकालना है, तो उसको हम अर्थ की सरफेस से क्या किस वेलोसिटी के साथ डाला जाए कि वो वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर ना करे. क्योंकि अगर हम इस पेन को थ्रो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसको थ्रो करें ऊपर की तरफ बेटा, तो हमारी वेलोसिटी इतनी नहीं होगी कि इसको थ्रो करने के बाद ये बाहर ही निकल जाएगा अर्थ के एटमॉस्फेयर से. व्हाट हैपेंड, इट विल कम बैक. कितना ही भी तेजी से थ्रो कर लो क्या हो जाएगा, वापस से अर्थ के ऊपर आके गिर जाएगा. बिकॉज देयर इज अ मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायरमेंट होती है जो इसको बाहर निकाल सके. वो कितनी होती है आपकी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की होती है बेटा. इस वेलोसिटी के साथ अगर इसको थ्रो करेंगे तो ये इतनी स्पीड के साथ जाएगा, वापस अर्थ पे आके नहीं गिरेगा, ये बाहर निकल जाएगा अर्थ के एटमॉस्फेयर से. क्लियर. ग्रेविटेशन फील्ड अभी बताया ना क्या होता है. ग्रेविटेशन फील्ड होता है स्पेस, अर्थ के चारों तरफ का वो स्पेस जिसके अंदर कोई भी पार्टिकल अगर एंटर कर जाएगा तो अर्थ उसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींच लेती है. क्लियर. अगर उससे एटमॉस्फेयर से बाहर रहेगा तो क्या रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा स्पेस के अंदर, इधर उधर घूमता रहेगा, क्योंकि उसको कोई अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा. वही चीज है कि ये पेन है, अगर मैं इसको लीव करती हूँ तो ये नीचे की तरफ ही जाता है, क्योंकि अर्थ किसको कर रही है, इसको अट्रैक्ट कर लेगी. अगर मैं इसको ऊपर की तरफ थ्रो करूं ऐसी वेलोसिटी के साथ, इस वेलोसिटी के साथ कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से ही निकल जाए, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी. दिस इज द सिंबल ऑफ एस्केप वेलोसिटी. आफ्टर coming out from the earth atmosphere, for example this one is the gravitational field of the earth. यहाँ तक क्या है ग्रेविटेशन फील्ड अर्थ का, जैसे इस फील्ड से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा बेटा, तो वापस इस फील्ड के अंदर एंटर नहीं करेगा. इसके बाद इसको इस वेलोसिटी के साथ डाला जाता है कि इट विल बी स्टार्ट रिवॉल्विंग. सैटेलाइट की हम बात करते हैं कि सैटेलाइट क्या है, अर्थ का सैटेलाइट होगा, वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहेगा. सैटेलाइट भी आपके दो टाइप के होते हैं बेटा, स्टेशनरी और आपके सिंक्रोनाइज पोलर सैटेलाइट. तो कुछ तो पोल के चारों तरफ रोट करते रहते हैं, कुछ आपके स्टेशनरी होते हैं कि यहीं पे क्या है, रिवॉल्व करते हैं, स्पिन करते रहते हैं. ओके, सो एज सम आर रोटेटिंग स्पिनिंग सराउंडिंग द अर्थ, कुछ क्या है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं. पोलर सैटेलाइट जो इस रिवॉल्व करते हैं, तो रिवॉल्व करने के लिए हमें किसी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि सैटेलाइट को सेट किया जाए. आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग दिस वन अराउंड द अर्थ. क्लियर. अभी रिसेंटली हमने क्या था, नासा ने जो डाला गया था सैटेलाइट मून के ऊपर जो गया था बेटा, उसकी भी क्या थी कि पहले उसको क्या किया जाता है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करवाया जाता है. रिवॉल्व करवाने के बाद जैसे जैसे रिवॉल्व करता रहता है कि उसकी स्पीड क्या होती जाती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी. जैसे जैसे धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होने के बाद क्या है, वो इस एटमॉस्फेयर को छोड़ के अर्थ के सराउंडिंग वाले पोर्शन को छोड़ के क्या है, मून के पास जाएगा. मून के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहेगा, यहाँ से निकल के क्या है, मून के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहेगा जब तक उसको क्या है अपनी पोजीशन ना मिल जाएगी सेट होने के लिए, तब तक वो क्या है यहाँ रिवॉल्व करता रहेगा. तो उसको इसके चारों तरफ रिवॉल्व करवाने के लिए जिस वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी. Understood na? That is escaping out from the atmosphere, escape velocity, and to revolve surrounding the earth, that velocity requirement, this one we will call it orbital velocity. Okay, and here escape velocity we will solve this one, that will become under root 2gr beta, 2gr, and this one here orbital velocity we will solve, then this one here will become out under root gr. This one we will solve how they are coming, what is the relation between them. Here we can say beta escape velocity will be here under root 2 v naught, means escape velocity should be more as compared to the orbital velocity. escape velocity ज्यादा होती है orbital velocity से, क्योंकि escape तो क्या होता है, इसको निकालना होता है, orbital क्या होता है, इसको चारों तरफ orbit में revolve करवाना. So during this one which velocity will be there during the revolution, that we will call it orbital velocity. I hope you understood beta difference between escape velocity and your orbital velocity. So tomorrow we will discuss there how we can solve this one, escape velocity and orbital velocity. So thank you for watching today our video. I hope you are understood better this one. Then have a nice day.